अपनी गुफ्तगू के शुरू के कुछ हिस्से में मैंने आपको डराना है, राइट? फियर मार्केटिंग, इट्स अ बिग थिंग, वी नीड टू एट टाइम्स डू दैट. लेकिन ये डरावा जो है वो कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बिना पर है जिससे लाइलमी, not knowing them or denying them, are the biggest impediments to flourish, to feel that continuum of well-being we always aspire for, but it becomes very challenging for us many times, right? To begin with, what is the mental health landscape of Pakistan? Over 50 million people suffer from mental illnesses in Pakistan. British Asian Trust reports that. 1 in 4 people in Pakistan are experiencing mental health problems. On a lighter note, I ask my audience, look around. If you see 3 normal people, you are the 4th one. 8.9 suicides occur per 100,000 people, whereby male are 13.3% and female are 4.3% in 2019 only. This is WHO's figures. And please bear in mind, this is Pakistan, whereby underreporting suicide is also in place. Right? Abhi the very tragic incident of Bilal Pasha, if I'm recalling his name, शुरू में रिपोर्ट आती रही हार्ट अटैक हो गया. तारिक जमील साहब के साहबजादे का पहले फॉरन क्लेम आया कि जी वो सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और उसके बाद हुआ कि नहीं, वो बंदूक खुद से चल गई. So that stigma which is prevailing across the mental health ecosystem, but when it comes to depression and suicide, it is enormous. 15 to 35 people die every day by suicide. Ladies and gentlemen, it's Pakistan. While keep the underreporting in mind. Children and adolescent mental health problems in Pakistan are much higher, 35% than the global prevalence, estimated from 10 to 20%. It's a local study. It needs to work. IT? Okay, sorry. I think I'm standing at a wrong place. The number of drug addicts, अच्छा पाकिस्तान का एक और मसला है, and I am talking to the thought leadership of this country. So I would request you to please add to the knowledge economy by documenting the knowledge economy. Pakistan is the least documented knowledge economy of the world. And the problem is, whatever figures we have got, they are either old or obsolete. हम 2013 में जब 170 मिलियन थे तब ये फिगर आया हमारे पास, और 2013 से आज 10 साल हो गए. There is no establishment survey of overall medical health and mental health in particular. No establishment survey in Pakistan. I can't tell you with the accuracy and authenticity what is the prevalence. Pakistan has, as you can see, 6.7 million. However, the estimated number of addicts today stood close to 9 million. Pakistan has only 0.19 psychiatrists per 100,000 inhabitants. It means कि 5 लाख पाकिस्तानियों के लिए एक साइकेट्रिस्ट है. अच्छा, और मसला ये नहीं है, मसला ये है कि over 2/3 individuals who are suffering from any minor, moderate or severe mental health condition, they never seek help. And why don't they? It's very expensive. It's very expensive. For porn, it is 1 with 1 free. It's no more expensive. Tell me the next very reason. Stigma. लोग हमें पागल समझेंगे. It is the stigma we are talking about. Being in a highly judgmental society, but even in non-judgmental society, you are foreign qualified youngsters. बताइए क्या बाहर भी आपने ये stigma देखा? They don't acknowledge. By not acknowledging, you are referring to their unawareness or denial.
Denial. Because not knowing is one element. Knowing and not accepting is another thing. For instance, all of you must have seen many, indeed, Sir? narcissistic people. Here. Yeah. Oh, yeah. Sir, while you were saying, I wanted to add in a comment कि इसलिए भी नहीं सीख करते क्योंकि इसको हमारे यहाँ prioritize नहीं किया जाता. इसको बहुत secondary रखा जाता है. Prioritize नहीं किया जाता. और जो चीज़ prioritize, क्या दो चीज़ें mutually exclusive होती हैं? मतलब if I want to, what do we prioritize by the way as Pakistanis? Sir, हम लोगों का नहीं. Religion, 3 P's, power, prestige, privilege, family. Family is a protector of mental health. But tell me honestly, in Pakistani family structure, does it become more suffocating, disabling, or more enabling? Be very truthful. कुछ हमें gulp down करनी है realities, right? बेदुल्ला अलीम तो कह गए कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इसके दर भी ना चाहो कि दम निकल जाए. So यहाँ इतना चाहा जाता है कि आपका दम निकल जाता है, right? So that is an I would like to discuss it further, but अगर हम ऑडियो से कनेक्टेड हैं, अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी यू आर पार्टिसिपेटिव. मैं जल्दी ये अपनी तकरीर ख़त्म कर दूं 15-20 मिनट में, फिर आई वुड लाइक टू टेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, एंड प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस, एंड I would encourage you to open up, and even if you ask anything personal, because I'm going to share a few things personal as well to give you that confidence. Gentlemen, in my folder, एक वीडियो होगी, myths about seeing a psychologist. क्या वो चल सकती है with audio? Please do that. वेलनेस की जानिब से खुशामदीद. आज हम बात करेंगे कुछ गलत मफरूज़ों के हवाले से जो नफ्सियात और माहिरीन नफ्सियात के हवाले से कायम है. कि जो एक मरतबा किसी नफ्सियाती मर्ज का शिकार हो गया वो कभी ठीक नहीं हो सकता. हर मसले का हल मौजूद होता है. मेडिकल साइंस की रूह से देखें तो जो बीमारी जितनी पुरानी होती है उसका इलाज उतना ही दिक्कत तलब होता है. नफ्सियाती मसाइल का भी बिल्कुल यही मामला है कि अगर वो बहुत देरीना मसला है तो उसका हल जो है वो दिक्कत तलब होगा, मुश्किल होगा. इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि जब भी किसी नफ्सियाती मसले की इब्तदाई अलामात का आपको इदराक हो तो उसी वक्त आपने माहिरीन नफ्सियात से राबता कायम करना है. हर नफ्सियाती मसला काबिल इलाज है. माहिरीन नफ्सियात सिर्फ बातों पर टरखाते हैं. तो जनाब, क्या ये बात अच्छी नहीं कि अगर मसला सिर्फ बातों से हल हो सकता है तो मैं आपको उसके लिए दवा ना दूं, आपको सर्जरी की ज़रूरत पेश ना आए और बातों से ही आपके मसाइल हल हो जाएं. इसको हम अपनी ज़ुबान में साइकोथेरेपी या काउंसलिंग कहते हैं, जो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक ग्राउंड्स पर की जाती है. और ये महज आम सी बातें नहीं होती, बल्कि बातों ही बातों में हम अपना जो तरीका इलाज है उसको इस्तेमाल करते हैं. आखिरी फिक्री मुगालता बड़ा ही दिलचस्प है कि माहिर नफ्सियात के पास जाना पागलपन पे मोहर लगा देता है. अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ. माहिरीन नफ्सियात चूँकि बहुत ज़्यादा नफ्सियाती और जज्बाती मसाइल को सुनते हैं साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के दौरान, तो उनके अपने एंड पर भी बहुत से जज्बाती मसाइल का अंबार इकट्ठा हो जाता है. उससे छुटकारा पाने के लिए माहिरीन नफ्सियात खुद भी साइकोथेरेपी के सेशंस लेते हैं, यानी वो खुद माहिरीन नफ्सियात के पास जाते हैं और साइकोथेरेपी सेशंस लेते हैं. अगर ये मफरूज़ा दुरुस्त होता तो एक साइकोलॉजिस्ट कभी खुद किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाए. I can be heard even at the back without this mic, but I won't be recorded properly, which is more important. So this is the landscape of mental health of Pakistan. We did talk about myths. Now what to do? There are two ways.
ऑनसेट ऑफ एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है उसकी एज की रेंज 13-14 ईयर्स होती है. ये एडोलसेंट्स का वो टाइम है जिसमें, like Mars said, when you are hungry you are no more yourself, when you are teenager you are no more yourself, right? This is what I tell many parents, rather all parents who come to me अपने बदतमीज़ बच्चों के साथ कि डॉक्टर साहब ये देखें ना, 2 बहनें इसकी बड़ी, ये तो एसर हैं और इसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता और निकम्मा निकटू, समझ नहीं आ रही what's wrong with him. Nothing is wrong with him. He's an adolescent. He's an energy bomb experiencing immense secretion of unknown hormones. The whole endocrinal system is introducing a whole new world to him or her. And if he will not misbehave, then who will? Right? If he would not experience that disruption in the relationship maintenance, then who will? So they, mostly 90% of parents end up having therapy or counseling with me, not their adolescent children. So what is the remedy then? 13-14-15 बरस की उम्र में न्यूरोटिक या साइकोटिक, न्यूरोटिक कंडीशंस लाइट मॉडरेट कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लाइट एंजाइटी, स्ट्रेस, थोड़ी सी मेलनकॉली या ब्लू मूड्स एक्सपीरियंस करते हैं, but it does not cause dysfunction. We keep on doing, right? Our work, our jobs, but if they don't get resolved with internal or external help and realization of the problem, it becomes severe. Unaddressed, unheeded neurotic conditions enter into the vicinity of light psychotic conditions. Psychotic conditions or psychotic disorders are the extreme disorder, जिसको आप अपनी जुबान में पागलपन कहते हैं, जो हमारी 350 से ज़्यादा डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक मैनुअल में ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वो साइकोटिक कंडीशन होती है. क्रॉनिसिटी एंड इंटेंसिटी 2 प्रिडिक्टर हैं कि प्रॉब्लम के हल होने का, किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के एड्रेस होने की पॉसिबिलिटी, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोग्नोसिस कहते हैं, वो कम होगी या ज़्यादा होगी. मेरे few thousand hours of therapy experience or talking to healthy people like you in corporate trainings, in boardrooms, places like this, I've gathered some insights. And the biggest one is, we miss the opportunity of understanding, accepting, and practicing preventive healthcare regime for our personal well-being. The wellness model. और ये wellness model आया कहाँ से, इसको भी आपको समझना ज़रूरी है. साइकोलॉजी फिलॉसफी का डेरिवेटिव है. 1950-60 तक डिग्री जो होती थी साइकोलॉजी की, वो होती थी मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी इन फिलॉसफी. आज भी आप जब एम.फिल करते हैं, यू नो दैट एम.फिल is actually Masters of Philosophy. In that particular discipline you have done M.Phil, which has been and is being replaced with MS degree, जो हमारी 17th and 18th year of education है. 1950 में सारे साइकोलॉजिस्ट चूहों और कबूतरों के साथ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में मसरूफ थे, और वहाँ बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट आया. स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट उस पर काम हुआ. 70, 80, 90 की दहाई में psychologists, जो कि they are spearheaded by, all of you must be aware of it, APA. और APA में भी एक साहब हैं बहुत acclaimed और he's a very celebrated psychologist, Martin Seligman उनका नाम है. If you have heard and listened his TED talk, if not, please do so. ये साहब बड़ा symbolic एक स्टेटस रखते हैं साइकोलॉजी फ्रेटर्निटी में कि ये 60s 70s में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे. 80s 90s के अंदर ही वाज वर्किंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो 80-90 की साइकोलॉजी पैराडाइम वाज क्लिनिकल साइकोलॉजी. एंड लेट 90s विद द बिगिनिंग ऑफ दिस मिलेनियम, psychology subscribed to the concept of positive psychology, and illness model was replaced with wellness model of mental health.
And that's why maybe this very topic, जिसमें बड़ा लंबा चौड़ा सा टॉपिक था, इससे आपसे मुखातिब होने का मौका या एक्सक्यूज इस टॉपिक पे बेसिकली रेफर करता है कि हम प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ केयर को अंडरस्टैंड करें, जिसका एक कॉन्टिन्यूम आपके सामने है. दिस इज द 012. This is disease developing. The center is the comfort zone. When you say, oh, there is no illness, no symptomatic illness which needs or merits a treatment. But we call it false wellness because WHO says absence of illness is not wellness. So what is wellness then? In wellness, starting from disease, multiple medications चल रही हैं, poor quality of life है, potential becomes limited and body has limited function. Moving on, जब हम illness से wellness की तरफ जाते हैं, आप वहीं से ज़रा इसको टैब करते जाएं दोस्त, next, या सारे कर दें इस पूरी स्लाइड पे जितने भी हैं. Poor health is the next. Symptoms, drug therapy, surgery, losing normal function. ये जो कंफर्ट जोन आ रहा है ना फॉल्स वेलनेस का, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, इसमें सिम्टम कोई नहीं है. आपकी न्यूट्रिशन इनकंसिस्टेंट है, आप एक्सरसाइज जो है वो उसकी पीरियोडिसिटी बड़ी इफेक्ट होती है, यू आर नॉट रेगुलर, और हेल्थ इज नॉट अ हाई प्रायोरिटी. जो अभी आपकी तरफ से कमेंट आया, हेल्थ इन जनरल एंड मेंटल हेल्थ इन पर्टिकुलर. अच्छा, जो मेडिकल हेल्थ होती है वो तो मरता क्या ना करता, आप जाएंगे after self-medication, if things are not getting resolved, eventually you have got doctors and they are in plenty, at least in the big cities, so you get things done. And doctors have made you attuned to third and fourth generation antibiotic, right? And that's what you have accepted, and not only you have accepted, your bodies have accepted. And now second generation antibiotics wouldn't work because you have already taken, you are already taking third or fourth generation antibiotic. Good health, अब ये 7-8 ना, from 7 onwards, you are doing regular exercise, good nutrition, wellness education, minimal nerve interference. Nerve interference, हमारे nerves, हमारी बोन्स और हमारे मसल्स के कंजंक्शन का नाम है. मेरे और आपके लाइफस्टाइल आज इस चीज़ को भी हम एक्सेप्ट करें, अननेचुरल हैं. ये जो 8 से 10 घंटे टेबल चेयर पे हम बैठे होते हैं, किसी भी पॉस्चर में बैठे हों, अब स्क्रीन के लिए भी एक्सरसाइजेज आइज की, नेक की मौजूद हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्पीशी, वी आर नॉट मेड टू सिट for 8 hours. Yes, this particular posture is good enough for an hour or so, but we are not made to sit like this. So उसी के नतीजे में जो आपको body aches, muscle spasms और किसी भी किस्म की जो आपको पट्ठों का खिंचाव, दबाव, very light symptoms जो आपको पता नहीं चलता कि I'm very comfortable, but why is it happening? It is happening because you are comfortable. अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे. सो गुड हेल्थ एंड ऑप्टिमल, गुड हेल्थ से ऑप्टिमल 100% फंक्शनिंग एंड कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट. यू आर वर्किंग ऑन पर्सनल वेलबींग regime at the moment. You have got 1 power hour every 24 hours whereby you will do some self-care activities which suit your mind, body and soul. If you are doing that, you are mindful of it, if it is the part of your career progression plan, fine. You are somewhere from 7 to 10. If not, you know where you are. Now, ये तो हो गया scary part. अब इसको कंट्रोल कैसे करें? हमें पता चल गया कि चैलेंजेस क्या हैं, प्रेवलेंस क्या है. हम बीइंग एलुमनाई, बीइंग द थॉट लीडरशिप, डिनाइल में भी नहीं है, हमें एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है. वैसे बताइएगा अगर प्रॉब्लम है Q&A में, तो हम उसे भी थोड़ा सा एड्रेस करेंगे. मैं एक कॉन्सेप्ट दिया करता हूँ अपनी मुख्तसर गुफ्तगू के मौक़ों पर
कि एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से निकलिए। हमारा सबसे बड़ा मसला जो 21st सेंचुरी का और इस हाइपर कंपेटिटिव वर्ल्ड में ब्रॉट अप होने का सबसे बड़ा जो फॉल आउट आया, उसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। हमें एक गैर मामूली प्रेशर हर वक्त अपने आसाब पर महसूस होता है that we have to run fast, because Bill Gates once told that it is not big which eats small, it is the fast which eats slow. So we don't want to be swollen or eaten by the fast, and that's why we have to be the fastest runner in the race. और अगर कहीं हम सस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए पड़ाव करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सी ट्रैफिक गुजर गई और मैं पीछे रह गया। मेरे कंट्रोल में जो चीजें नहीं हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि हमने वॉर ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जीती है। हम बीइंग ह्यूमन बीइंग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम बहुत केपेबल हैं, नो डिनाइल ऑफ दिस फैक्ट। लेकिन क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। एक और मुसीबत भी गले पड़ गई कि वी आर द मोस्ट एंक्शियस existing living being in this entire known universe. Anxiety is endowed and is embedded in us, being a psychologist or not being even a psychologist. And that's why it happens. पाकिस्तान में कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज और जर्नलिज्म में लाइफ लॉन्जिविटी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, दे डाई अर्ली। And as a matter of fact, there are many studies जिसमें बताया गया कि psychiatrists and psychologists, they die early as well. Why do they die early? Because their intake of their professional life is very toxic. Though I'm being paid very well for that thing, but that paying well, if is not converting into my self-care regime, अगर मेरा 1/3 of the time and energy and attention traveling में, रिक्रिएशन में, फन में, गेम्स में नहीं जा रहा, तो देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड दैट आई विल बी exhibiting shared psychosis, because shared psychosis is the concept कि अगर बहुत healthy spouse, sibling, parents अपने किसी unhealthy psychotic state में पाए जाने वाले किसी loved one की take care करते हैं तो वो similar symptoms exhibit करना शुरू कर देते हैं। It's the theory proved by mirror neurons. जिस तरह आप जमाई लेते हैं तो somebody will take a जमाई, आपको किसी को सोता हुआ देखेंगे तो आपको, so we are there with mirror neurons. So that is where we have to understand the vulnerability is not undone by knowing it only. अगर ये होता तो चौथी जमात का तालिब इल्म, 4th ग्रेड के तालिब इल्म की हैसियत से मुल्तान के जिस स्कूल में मैं अपने घर से जाया करता था, मेरे स्कूल के साथ बिल्कुल एडजेसेंट मुल्तान के एक बहुत मारूफ साइकेट्रिस्ट का क्लिनिक था। ये मेरी ज़िंदगी का वो दौर था जिसमें मुझे नहीं पता था कि माहिर अमराज नफ्सियात व मंशियात क्या होता है या हु इज़ अ साइकेट्रिस्ट, बट आई वॉज यूज टू बी वेरी इंट्रीग्ड। बहुत रश होता था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती थी, एंड Dr. Azhar Hussain was his name, and 2020 में in a spate, in an argument with his daughter, he shot her dead and committed suicide. Multan ka one of the most acclaimed psychiatrist, right? So ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका. So that is what happened, exactly happened or may happen with a person who is exposed to any toxicity around. So that is where I realized I should give you this idea. Please do not try to control which you can never control. What you can control is your boundaries, your thoughts and actions, your goals, the way you speak to yourself, your self-talk. Do you know how many thoughts come across in your mind every day? ये न्यूरो इमेजिंग ने बताया है, उससे पहले तो हम कहते ये काउंट ही नहीं हो सकती थी. न्यूरो इमेजिंग like MRI and CT scan confirmed something. How many thoughts come across in human mind in a day? Rough idea, quick question. And
Oh, that's a bit too much. Okay. 50 to 70,000, ma'am. 50 to 70,000 thoughts. और ये भी 15, 20, 25 साल पहले ही पता चला कि सोच गैर मरई चीज नहीं है. Thoughts are things. They are electrochemical neurotransmissions. आपके दिमाग में इस वक्त हजारों करोड़ों बल्ब जल बुझ रहे हैं. So how you speak to yourself, how you talk to yourself is what you can control. What are the areas you can give energy to, and how do you handle challenges? What you can't control at all. I can't control this presentation anymore. Next, करते जाएं. Tabs. Yeah, the past, the future, the actions of others, the opinions of others, what happens around me, what other people think of me, the outcome of my efforts even, and how others take care of themselves. How crucial it is, how much bothered we are to help somebody. Please take care of yourself. We are bothered while being a caregiver to somebody, but if somebody is not ready to take care of himself or herself, he or she will never be able to take care. I can share these with you on your social media pages or personally, so no issues. Please take an account of this thing. And now imagine, ask yourself, because you can control how you speak to yourself, ask yourself, okay, are you trying to take control of these things somehow? नहीं पीछे जाएं भाई अभी. Don't we live in our past and future a lot? Right? And that's where we get caught by this illusion of control. Yes, my last slide. कागज आ गया जिससे मुझे हमेशा डर रहता है. पॉजिटिव साइकोलॉजी ने मार्टिन सेलिगमैन ने एक मॉडल दिया जिसको परमैव कहा जाता है. परमा किया, वी उसमें बाद में ऐड हुआ. देयर इज ऑलवेज अ 2.0 वर्जन ऑफ एवरीथिंग. सो परमा का 2.0 वर्जन है, वेयर बाय दे रिकमेंड. जी नेक्स्ट क्लिक, एक एक करके कीजिएगा क्लिक. अभी आपको शायद नजर ना आए. पॉजिटिव इमोशंस का नाम दिया. 1 to 3 के रेशो से आपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन को मैनेज करना है. One negative emotional experience should be followed by 3 positive emotional experiences. One bickering, one quarrel with your spouse, with your colleague, emitting bad negative hormones in your body, secreting more cortisol, should be offset by doing something which should give you the kick of endorphins or oxytocin or dopamine, right? The second thing is engagement. You have to be engaged, committed to what you do. Kindly choose your professions and spouses very wisely. They are irreversible blessings and damages, right? So you have to feel that engagement. And if I am not wrong, somebody in Q&A can correct it, around 70% Americans report not being engaged in their jobs, not feeling that flow and degree of desired engagement and satisfaction in their jobs, let alone Pakistan. Relationships, हार्वर्ड की लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आप सब ने देखी होगी, 2010 में ये कंक्लूड हुई, 75 साल चलती रही, 1935 में इंस्टीट्यूट हुई थी. नहीं है तो 12-17 मिनट की टेड टॉक है, प्लीज़ डू वॉच दैट टेड टॉक. उन्होंने 75 साल 250 फ्रेशमैन जो हार्वर्ड में आए, उसके बाद 2-2 साल बाद पीरियोडिक डाटा लिया, और सिर्फ सेल्फ रिपोर्टेड डाटा नहीं लिया, सेकेंडरी डाटा भी लिया, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स, उनकी इलनेसेस, उनकी स्पाउसल रिलेशनशिप्स, और 2010 में उन्होंने कंक्लूड किया कि हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए अच्छे रिलेशनशिप्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता. So that is the significance of investing in your good relationships. A sense of being connected to something bigger than ourselves, being part of a whole, looking beyond your own self. Philosophical सी चीज़ है, but you can operationalize it in your life, that if you are contributing to something bigger than your own very self, own household, that is actually prelude to your well-being. Next. अचीवमेंट, डोपामीन का आपने जिक्र किया. अच्छा, अचीवमेंट के लिए एक गुजारिश
करना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े गोल्स को या सबसे बड़े गोल को अपना विजन बनाएं और इस गोल को 50 छोटे छोटे गोल्स में तोड़ दीजिए. People with high motive of achievement make small goals, moderate goals, not very big, hairy, audacious goals, like Jim Collins had, BHAGs. No. Even if they have BHAGs, big, hairy, audacious goals, they break it into minor, teeny tiny goals. The one action on the way to which can be done today after this session. That is your goal. Otherwise, it is illusion. It is not goal. Vitality, eat well, move around, be physically fit. Take care of your BMI. Take care of your outlook. Look good in the mirror in the morning. Though I can see that all of you are very good looking people. But these looks need to be maintained. Ladies, I'm talking to you. After being mom and touching 40s, shouldn't confine you to look like a mommy who is flustered all the time. You should look as beautiful as you used to look when you were 20, 22, 23 or 18 years old. And same is the case with men, right? So, okay, behave like your age, but still try to look good, try to look beautiful, and stay beautiful from inside out. And that is what vitality is. And that is what brings me to the मेरे ख्याल है this is the last slide. I'll open the house for the Q&A. This is a YouTube channel which we keep on replenishing because I do believe कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी questions को पाकिस्तानी अंदाज में answer नहीं किया जाता. Not being cynical, but still हमारी knowledge का बहुत बड़ा source कल्चरली इनसेंसिटिव या कल्चरली नॉट सो फेयर स्टडीज से आता है. हमारे यहाँ बच्चे को डांट पड़ रही हो अब्बा से और वो अब्बा को यूं करके देख रहा हो तो अब्बा कहते हैं बदतमीज कमीने, आंख नीचे करके बात करो. एंड बाहर अगर वो इधर उधर देख रहा हो तो द जेंटलमैन, द डैड विल से हे लुक इनटू माय आईज. सो इन सच डिफरेंसेस. और बाहर के कल्चर में आज तक किसी को रात को नाइटमेयर में जिन नजर नहीं आया और हमारे यहां आज तक किसी को ज़ॉम्बी नजर नहीं आया, राइट? जितना मर्जी आपने डराया हुआ हो किसी को. सो वी ट्राई टू आंसर पाकिस्तानी क्वेश्चंस इन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव through this YouTube channel. So that's all from my side, ladies and gentlemen. House is open for Q&A. Sir? Thank you very much. Pleasure. Sir? I just have a small comment and a message for everyone. I'm a psychologist and educationist. Let's stop saying somebody committed suicide. I learned this from a young psychologist, and he very well said somebody died of suicide. The suicide occurs. So let's stop saying somebody committed suicide. Let's say somebody died of suicide. Good one. Sir? Any question? Sir, I have a question. Sir, as you said in your wellness model, आप बता रहे थे कि what you should know about your mental health ना. तो सर जनरली अगर हम किसी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कोई बीमारी भी होगी, हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है सर, मतलब हम उसमें उतने इंडल्ज होते जाते हैं, हमें लगता है कि हम उतने ही ज़्यादा बीमार हैं एक चीज़ के बारे में जब हम पढ़ने लगते हैं. तो सर व्हाट वुड यू रिकमेंड के एक मेंटल हेल्थ के लिए हम लोगों को कितनी नॉलेज हमारे लिए अप्रोप्रिएट है? एक्शन चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए. इस वक्त इस हॉल में जितने लोग जिस अच्छे IQ और EQ के साथ बैठे हैं ना, यू नीड whatever you needed to know, you know it well. वेल-बीइंग के लिए आपको एक लफ्ज भी और नहीं जानना. आपको अपना BMI कैसे मैनेज करना है, आपको अच्छा कैसे दिखना है, आपको 8 घंटे की नींद कैसे लेनी है, आपको अपनी अच्छी गट हेल्थ कैसे मेंटेन रखनी है, आपको अपने रिलेशनशिप को मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव एंगल्स पे एंकर कैसे करना है. Who is supposed to know anything more what is already known to you? I'm sorry, you don't need to. Put it into action, please. Action is far more important than knowing something. Wrong action is better than indecision. You know that. All of you know that. So, वो जो आप कह रही हैं वो तो एंग्जाइटी और स्पेशली जो हमारे OCD ओरिएंटेड जो केसेस होते हैं वो बहुत पढ़ के आते हैं. मेरे पास सबसे ज़्यादा रेफरल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से आते हैं
और मेरा जो पेशेंट आता है वो आधा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है. आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को इतना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का नहीं पता होगा जितना उसको पता होगा. सो प्लीज डोंट रीड, डू मोर. वैसे डू मोर अच्छी बात नहीं है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सर. वालेकुम. नाम भी बताइएगा ताकि मैं आपको नाम से मुखातिब कर सकूं. डॉक्टर साहब, दिस इज रमेश कुमार. Ramesh. First of all, thank you so much for your wonderful session and the presentation. I have just one query that you showed one slide there, the things that are within your control and out of the control. Yeah. What do you think about the role of genetic and heredity? Because these are the things that are going to be transferred from the parents to the children. You are very right. And this is something very uncontrollable. Uncontrollable. So just, I just want to have a... बहुत pertinent question है और इसका जवाब भी टूफोल्ड है. 50% जहनी और जिस्मानी बीमारियां हेरिडिटरी इंडोव्ड होती हैं. यू कांट हेल्प देम फ्रॉम अकरिंग. जैसे मैम ने कहा, इट अकर्स, यू डोंट कमिट इट, इट अकर्स. I got fatty liver from my father. Actually, I did. Didn't get any other inheritance, which I always aspired for. But only inheritance was, anything fat in my inheritance was my liver. And when I realized it, now I have got two choices. To let it go, being neutral about it, or being progressive to maintain my well-being by sparing more time for my sports, by being mindful of my food. जिंदगी नहीं हराम करनी खुद पे. जैसे आपने कहा हाइपोकॉन्ड्रिया एंड वेरी कॉन्शियस इन फूड. नो, मैं चाहता हूँ कि 85 साल की उम्र में भी मैं एक हंसता खेलता, अगर मैं जिंदा रहा, वो दादा हूँ जिसके साथ उसके ग्रैंड चिल्ड्रन आके बैठना पसंद करें, ना कि वो दांत निकोसता दादा जिसके कन्नियाँ मारते हुए जा रहे हो क्योंकि दादाजी खुद तो कुछ कर नहीं सकते. सो आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा इन द एज ऑफ 85. हाउ इज़ इट पॉसिबल इफ़ आई मेक अ प्लान दैट हाउ ऑफन शुड आई ईट अ पिज़्ज़ा, राइट? सो हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगी. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फवाद खान और वसीम अकरम को एक दिन रियलाइजेशन हुई दैट दे आर डायबिटिक्स, बट दे डिसाइडेड टू बी हीरोज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड दे आर. राइट? आप होने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसके होने के बाद उसके आउटकम्स को डिले कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अनलाइक आपके अब्बा के जिनको पता भी नहीं चल सका या ही वॉज नॉट इक्विप्ड इनफ, वेल ऑफ to take care of himself that much. He was not as learned and knowledgeable as you are, so your responsibility is more. Sir, this is Mehboob Ali. हाथ भी खड़ा कर दिया करें जी महबूब. Sir, this is Dr. Mehboob Ali. Sir, my question is that when it comes to mental health, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये जो mental health के issues है ये टीन एज में शुरू हो जाते हैं बच्चों को ज़्यादातर. जी, बदकिस्मती से शायद दुनिया की दीगर ममालिक में तो होगा, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हमारी स्कूल्स में, हमारी कॉलेजेस में कोई स्क्रीनिंग नहीं है, और यूनिवर्सिटीज़ में न स्क्रीनिंग है, न साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, न वहाँ पर उनको एजुकेशन दी जाती है. तो हम अगर बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वाई नॉट साइकोलॉजी एंड वाई नॉट मेंटल हेल्थ? और जब हम इतने सारे लोगों को स्कूल के प्रिंसिपल से पूछे ना कि 50 टीचर तो रख दिए, कोई एक अच्छा ढंग का साइकोलॉजिस्ट. प्रिंसिपल का इशू नहीं है, ये हमारे तालीमी निज़ाम का इशू है. अगर यहाँ पे HEC के चेयरमैन साहब मौजूद थे तो शायद उनको ये स्टेप लेने चाहिए. चले गए, वरना तो आज मौका था हमारे पास. अच्छा, तो आप अपने तौर पर अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ. आप, मेरा ख्याल है, मैं क्विक जवाब दे देता हूँ. आप, मेरे ख्याल है पेरेंटिंग के उस लाइफ साइकिल में जब अभी आप, इफ़ यू आर मैरिड, तो बच्चे अभी स्कूल में होंगे, 3, 4, 5 ग्रेड्स, राइट, स्कूलिंग. एक मेरी गुजारिश, कुछ गुजारिशात हैं, और डॉक्टर साहब आपके लिए इन पर्टिकुलर और आप सब के लिए भी, अपने बच्चों का स्कूल के बाद का जितना टाइम वो होमवर्क करते हैं उससे दुगना टाइम उनके आउट ऑफ होम स्पोर्ट्स के लिए इंश्योर करें. आपने अपने बच्चों को जो आइंस्टाइन बनाने की ठानी हुई है ना, और आपको पता है कि लेटली मीडियन एज ऑफ डिप्रेशन डिक्रीज हुई है. लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डिप्रेशन एल्डरली ईयर्स की बीमारी समझा जाता था. आई एम सीइंग youngsters more than elderly people in my therapy chamber. Anxiety and depression, वैसे भी they are mother of all mental disorders. So उसकी वजह ये है कि उनकी वो फिजिकल एजिलिटी और जो वाइटैलिटी थी वो सफ़र हो गई.
So please make their lives vital. Their textbooks are highly counterproductive when it comes to this particular phase of their life. Dr. Sab, I'm really sorry that I have to interrupt you here. I'm really sorry for that, but I was actually listening to you और आपसे बात करके मुझे खुद ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कभी मेरे बच्चे थोड़ी बदतमीज़ी करते हैं तो मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। और 19 साल का होने दो। And I am a journalist. I'm trying to not die early. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।